Unfortunately, Mitchell Stark had other plans again. Injury रखते हुए the way he bowled, India losing a series after 12 years. 12 साल के बाद 4,331 दिन के बाद टेस्ट मैच हारे घर पे, बहुत बड़ा अचीवमेंट है. आई मीन इट्स नोन, बट यस लूजिंग अ स्ट्रीक, जब अंडरटेकर की भी स्ट्रीक टूटी थी तो सबको बुरा लगा था. हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. बाजीगर तो बोल रहे, लेकिन अभी बाजी आ रही नहीं जीतने वाली ऐसा दिख रहा है. एंड या आई मीन आपको कॉल आउट करना पड़ेगा बैट्समैन को. विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल प्लेड सेंसेशनली. मैंने ऐसा स्टार्ट दिया जो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बूस्टर था, लेकिन आप उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए. क्रेडिट न्यूजीलैंड को कम्प्लीटली देना पड़ेगा. आई मीन फ्यू मंथ्स अगो हम बोल रहे थे कि भाई न्यूजीलैंड की टीम उतनी खास नहीं है. एंड आपको लगा कौन बोले भाई वो खास नहीं? मैं तो नहीं, मैं बोला कि भाई उतनी बॉलिंग स्ट्रांग नहीं है. एंड बोला था न्यूजीलैंड जीत जाएगी. एक बार गलती हो सकती है, दूसरी बार नहीं बोल के दिखा दिया. वाकई एक बार गलती हो सकती है, दूसरी बार नहीं. एंड अगेन लाइक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे उतने टाइम से. एंड आप रियलाइज करोगे रेड बॉल फॉर्मेट में उनके ज़्यादा टेस्ट नहीं थे कंपेयर टू अदर टीम्स. न्यूजीलैंड हैज प्लेड लेसर टेस्ट क्रिकेट, बट इट टुक देम अ व्हाइल. स्कोर सेट हो गया. केन विलियमसन के बिना जीत गए उनका जो मेन प्लेयर है इंडिया में. काफी रन बनाए हुए हैं उन्होंने भी. एंड ही नोज द पिचेस एंड ऑल. या ही नोज द पिचेस. ही इज एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, बट दैट डिडंट स्टॉप देम. विलियम ओरोर आके जो तरीके से डाला. टिम साउथी 38 होगा मुख्य ने फास्ट बॉलिंग कर रहा अभी भी. ही इज कंप्लीटली किलिंग इट एज वेल. सो आई मीन यस यू हैव टू टेक अ पेज आउट ऑफ दिस. बट आई शुड से कि अपना वाशिंगटन सुंदर भी जबरदस्त बॉलिंग करा. उसके अगेंस्ट इन्हें भी पलटा के दे दिया. भाई वाशिंगटन सुंदर को तो रांची से लेके आए, उसको तो स्क्वाड में भी नहीं था. What do you think अपन ले लेंगे सर्च में? उसको पासपोर्ट दिला दो तो देख लेंगे. आधार कार्ड का कर देंगे लिंक मोबाइल से एंड प्रोबेबली इंडियन बन जाएगा. बट या चेन्नई सुपर किंग में भी खेलता है, उसको भी मालूम कि भाई इंडिया के कंडीशन कैसे. आपको मालूम मिचेल सैंटनर फर्स्ट स्पिनर नहीं है न्यूजीलैंड का. मतलब ही इज नॉट द फर्स्ट इन कमांड. एजाज पटेल, एजाज भाई जो है उनको पहले लेते, बट इन्हें 13 विकेट लिया. हिप में इंजरी रखते हुए सेकंड इनिंग्स पूरा डाला उन्हें. क्रेजी था ये. और ये जो एजाज पटेल जो बैटिंग पे था, तो मैं ये सुन रहा था कि पीछे अपना जो अपना पंत है वो बोल रहा था कि ऑफ पे डालो. उन्हें मार दिया तो उन्होंने बोला कि फिर अरे भाई मैंने समझा था उसको हिंदी आती. ने बोला कि नहीं उसको बोले कि इसको भाई हिंदी आती, तो उन्हें बोला मसला नहीं है. बोला उन्हें लाइक लाइट है, मसला नहीं है बोले. फिर भी एट द एंड ऑफ द डे देखो यू गॉट टू कांग्रेचुलेट न्यूजीलैंड, टेक द लॉस ग्रेसफुली. आपके फेवरेट नोमान और साजिद खान भी वहाँ मैच जिता दिया भाई. बहुत जल्दी पाकिस्तान को बहुत जरूरी था ये चेंज. हाँ भाई, पिच में बदलाव करे तो वो आई थिंक बाबर इज आल्सो रियलाइजिंग कि सही हुआ. स्टोरी डालाऊंगा जो प्राउड ऑफ द बॉय, सपोर्ट द बॉय डालाऊंगा. लेकिन हमारे साजिद यूसुफ भाई ज्वाइन करे, उन्होंने बोले कि भाई बोला था न्यूजीलैंड जीत जाएगी. आई मीन कंप्लीटली उनके फेवर में ही था गेम. अगर नहीं जीती तो वो अलग चीज. बट ये साजिद भाई क्रेडिट, आपने दोनों चीजें बोला. आपने बोले पाकिस्तान भी जीतेगी और आपने बोला कि न्यूजीलैंड विल बीट इंडिया, एंड राइटफुली सो. पाकिस्तान इंग्लैंड को भी 2-1 से हराया. एंड ये सेकंड हम यही बात क्रेडिट करना चाहेंगे कि भाई जिस तरीके से दे मैनेज टू ओन अप टू देयर मिस्टेक्स. फ्लैट विकेट दिया, आप 11 मैच आप घर पे हारे. ना आपके बॉलर्स काम में आ रहे थे, ना आपके बैट्समैन काम में आ रहे थे. अब एटलीस्ट बॉलर आपके इफेक्टिव थे. बैटिंग भी आई मीन जिस तरीके से अच्छी करी सऊद शकील, साजिद एंड नोमान बैटिंग के साथ भी भाई उन्होंने संभाल लिए. तो आई थिंक इनक्रेडिबल अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान. Yeah, he hit a 50 and the other guy hit a 45 or something. Yeah man, अब वो लोगों का बॉलिंग अटैक अच्छा दिख रहा है, स्ट्रांग दिख रहा है. बिल्कुल भाई. आई थिंक मेरे को दिखना कि अब ये जो जिस तरीके के लोग मैचेस जिता रहे हैं, कंसिस्टेंसी रहना आगे चल के भी, so that they can do something I must say. Yeah, something just like this. क्या पाकिस्तान WT से आना है? I mean देखो उनका रास्ता बहुत मुश्किल है अभी. I don't think it have a very strong point. अगर आप देखो परसेंटेज जो भी है, इंडिया इज देयर, ऑस्ट्रेलिया है आपके पास, फिर साउथ अफ्रीका, श्रीलंका है, फिर साउथ अफ्रीका है. तो ये लोगों की जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो और जो फिक्सचर्स आप साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के अगर आप देखोगे, दे आर अ लिटिल बिट फेवर्ड बिकॉज़ घर पे ही खेलने वाले वो लोग, राइट. तो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका का घर पे भी आज अपने इंडिया भी खेल रहा था भाई. हाँ, घर पे तो भाई बेघर हो गए घर से. खुद रहता थोड़ा एडवांटेज नो डाउट, बट लाइक फिर भी आपका जो परफॉर्मेंस है कहीं भी निकल के आ गया तो फिर नहीं रोक सकते. कहीं ना कहीं इंडिया लाइट ले लिया, सर न्यूजीलैंड को ऐसा हल्के में ले लिया. एंड वो जरा रियलिटी चेक मिल गया. फर्स्ट टाइम अगर आ रहे चलो कोई बात नहीं, समझ सकते थे. सेकंड टाइम पे भी बोले तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया. बैंगलोर में मेरे साथ थे. बैंगलोर का कैसा था मैच, वहाँ पे आप बोल रहे थे विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे थे, विराट कोहली स्लो खेल रहा था. आज भी देखिए विराट कोहली फर्स्ट इनिंग्स में भी कम मारे, सेकंड इनिंग्स में भी लेग स्टंप पे लगा उनको कि भाई DRS लिया, वो चलो ठीक है. बट लेफ्ट आर्म स्पिन से उनको तकलीफ है. सरफराज खान खेलने से थोड़ा सा रन रेट बढ़ा था, देन वो भी बस नहीं हुआ था. सो दैट अभी 150 रन जो उसके थे बहुत इफेक्टिव थे, बट और भी बढ़ना जरूरी था.
और भी कुछ रन्स आ गए थे अगर पॉकेट में तो फिर जबरदस्त रहता था मैच। ये टेस्ट में ओवरऑल देखो आप, फिर बैट्समैन कोई गलती वाले यू कैन से वॉशिंगटन सुंदर took 7 wickets, Ashwin took 3 wickets, and second half में Washington Sundar again picked up like 4 wickets, and your spinners did the job. It's just the batting has to come through. यशस्वी जायसवाल आपको जिस तरीके का स्टार्ट दिया आप उस पर कैपिटलाइज नहीं करे, आप उससे कॉन्फिडेंस कैसे नहीं ले रहे यार? इंस्पिरेशन देखो, बंदा आपको बाउंड्री पे बाउंड्री मारा, सिक्सेस मारा, इज कमिंग डाउन द ट्रैक, ही शोइंग यू दैट हाउ टू प्ले ऑन दिस पिच, एंड आप उसके बावजूद आप लोग डर डर के खेले, सैम के खेले। सचिन जडेजा, रविंद्रा ब्रो इज फैंटास्टिक टैलेंट। आई मीन उन्हें वो फर्स्ट टेस्ट में जो मारा ये टाइम पे, उसमें भी भाई वॉशिंगटन, फिर भी वॉशिंगटन सुंदर गॉड हिम आउट। मैं वही तो बोल रहा हूं, बॉलर की प्रॉब्लम नहीं है, पेसर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये विकेट पे, बिकॉज़ टर्निंग विकेट है। जो जसप्रीत बुमराह तो भी विकेट नहीं लिया, वो एक आध विकेट लिया होगा तो लिया होगा, लेकिन इसीलिए दोनों भी चले। आज सुबह जडेजा में क्या कि जग गया, उन्हें 3 विकेट उखाड़ दिया 15 रन में, बर्खास्त बिरयानी। अभी आप बैटिंग के हिसाब से देखो, दोनों टाइम आपके बैटिंग लेट डाउन करे, आपके कौन उठा के खेला भाई सिवाय जायसवाल के सेकंड इनिंग्स में, और फर्स्ट इनिंग में भी बेचारा जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ही थे जो 56 रन मार के थोड़ा बहुत 156 159 तक ले गए, वरना आपका वॉशिंगटन सुंदर नहीं मारता, आपका जडेजा वो रेंगते आज भी जडेजा अगर रेंगते नहीं खेलता था तो उतना पहुंचते भी नहीं थे अपन। 113 you would have probably lost by 200 runs. So what was the main reason behind batting this? is we have to question the batting on a spinning track भाई। What do you think guys, क्या प्रॉब्लम है? कमेंट पे हाँ बोलो भाई, आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी तरफ से तो बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किस वजह से प्रॉब्लम हुआ है? हाँ, क्या वजह से प्रॉब्लम है, who is the problem, any major changes, what was the problem, the major problem, just give us 5 पॉइंट की प्रॉब्लम्स क्या चीज में हुआ? तो डू यू गाइस थिंक कि भाई विराट को ड्रॉप करना पड़ेगा, या डू यू गाइस थिंक कि भाई इंडिया में बोल रहा हूँ मैं, नॉट अब्रॉड, अभी तो ऑस्ट्रेलिया जाना है अपने को अब्रॉड, लाइक अगर रोहित शर्मा में आपकी टेक्निकल डिफेक्ट दिख रहा है, रोहित शर्मा आल्सो इज गेटिंग आउट, आई कांट से इज इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म लो शेप। टुडे द विकेट वाज डिफिकल्ट, बट अगेन लाइक जायसवाल अगर आपके टीम में बैट कर रहा, सो आई डोंट रियली एक्सपेक्ट दैट यू गाइस स्ट्रगलिंग, सो मैं आई थिंक इट्स लाइक दैट। बोला था ना न्यूजीलैंड जीत जाएगी, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया, क्या पाकिस्तान अच्छा सॉरी ये कम है, मुझे पता नहीं क्यों यूँ लगता है WTC ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा, आपको क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया कैन प्रॉबेबली टेक इट, बात सही है कि बॉर्डर के पास करके बहुत रिलायंस है, अभी इंडिया को 4-1 मोस्ट या तो फाइनल जीतना पड़ेगा टू इवन मेक अ सब्सटेंशियल चेंज इन दैट टेबल। Now Australia is relatively relaxed because they're playing at home, but see India has done decent in Australia, so we have to wait till we get to Australia, वहाँ पे क्या, but yes कहीं ना कहीं I still believe कि India will make it to the final along with Australia। जो है अभी सिचुएशन वही सिचुएशन खेला जाएगा। अब ये मत बोलो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, ये है वो है, फिर वो तो आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट टीम लेके जाओगे ना, आप थोड़े हल्के पुट्टों को लेके जा रहे हैं, आप भी मजबूत टीम बना के जा रहे हैं भाई, 15-17 लोगों को लेके जा रहे हैं, इसमें रिजर्व्स भी लेके जा रहे हैं आप, सो यू आर गोइंग विद वन ठन के पूरा डिसीजन बना के, वो भी न्यूजीलैंड से हार रहे थे बोल के एकदम रात में कल डाल दिए भाई टीम। और कुलदीप और अक्षर चहल और सर क्या, कुलदीप और अक्षर चहल और सर क्या बोलना चाह रहे हैं साजिद भाई आप? सर रविंद्र जडेजा या कुलदीप और अक्षर चहल और सर, ये आपके क्या मतलब स्पिनर्स बोल रहे हैं आप, या डू यू थिंक इट्स लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम साजिद भाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम? या MC is there, he's saying sad gone, it's too early days, I mean see one thing that I'd comment Gautam Gambhir on is क्या यार हो ऐसा बोल रहे हैं, गोटी कल्टी मार बोल रहा हूं। having fun on the ground, I think one of the things would be कि भाई गौतम गंभीर जितना भी बोला, at least he brought an attacking intent, he went after the थोड़ा सा मेरे को बैट कमेंट्स की झलक दिखी गौतम गंभीर जिस तरीके से एग्रेसिव बैट, जो दिन पानी में डाले पैट कमेंट्स तो वैसा मुरझा जाता है, वो ऐसा है वो मसला। मेरे को झलक दिखी मेरे को पैट कमेंट्स की जो है गौतम। I think like one thing that he got said is he was going aggressive cricket खेलना है, aggressive cricket खेलना है, he didn't sit back and say कि भाई पूरा दिन बैट करो, वो भी मुश्किल था because again मिचेल सैंटनर आपके ताड़ के पीछे था। विनय सैंटनर है वो, बैटिंग कोलैप्स एंडरसन, बट व्हाट शुड बी डन टू गेट बेटर, you should I mean what should be done to get better, like and your batting you should like पहले you have to question that, हाँ स्पिन पे आपको खेलना वो सही टिके रहना, वही तो है इम्पोर्टेंट। yeah you got to be able to at least survive the new ball, you got to be able to make the ball like I understand, like look at Jaiswal man, like I you have to read the spinners, gave you the roadmap of how to play on this pitch. What do you think Musti? That's what it is, you just playing in a very defensive approach, very narrow minded way, I think थोड़ा और खुल के खेलो, and Rohit Sharma is capable of doing that, we all know that। Rohit Sharma लंबा भी खेल जाते हैं, जो unfortunately नहीं कर पाए। विराट कोहली के ऊपर भी सवाल है obviously, again he was struggling with the left arm spinner, we've already called that out, so I mean there are a lot of things। साजिद यूसुफ मलिक is saying कुलदीप अक्षर चहल और सिराज शामी के क्या होने की वजह से इंडिया हार गए। आई डोंट अग्री भाई, बिकॉज
आप देखो वॉशिंगटन सुंदर 7 विकेट लिया और कितने लेंगे विकेट्स भाई, जो भी लेने का विकेट्स तो ले लिए, प्रॉब्लम बैटिंग में आ गई थी, स्पिनर्स को रीड करके खेलना था आपको, बिल्कुल दैट वाज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम वाज नॉट बॉलर्स। अगर आप देखो अश्विन भी बहुत रन्स के लिए गया, अश्विन की भी लाइन नहीं पकड़ी, अश्विन को भी काफी मारे, एंड अश्विन आल्सो हैज टू टेक ओनरशिप टू दिस डिफीट बिकॉज ही शुड हैव बीन अ बिट मोर बेटर सरफेस आपके लिए बना था, आपके जैसे बॉलरों के लिए बना था, सो यू डिडंट टेक एडवांटेज ऑफ दैट। जडेजा का थोड़ा स्किड नहीं हो रहा था, बट टुडे मॉर्निंग इट स्टार्टेड स्किडिंग, हिट द राइट एरियाज, ही गॉट 3 विकेट्स विद इन 50 रन्स, सो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे Vinay is saying we talk about India not playing spin, but are we super confident we will do better in Australia? Those won't be spinning tracks. Yeah, no. भाई इस हिसाब से देखो, वो फास्ट ट्रैक तो ऑलरेडी आपको मालूम है, आईपीएल खेल खेल के इतने परफेक्ट हो गए आप, हिटिंग विटिंग तो मालूम है, स्पिनर पे जब बॉल टर्न हो रहा तो वो टाइम पे आपको रीड करना है, बस यहाँ का प्रॉब्लम था। अब ऑस्ट्रेलिया के पिचेस का क्या प्रॉब्लम है, अपन वहाँ का वहाँ अपन सॉर्ट आउट कर सकें। व्हाट डू यू थिंक मुस्ती? No, I think it's right. ऑस्ट्रेलिया में भी प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम नहीं है। You're going to have problems in Australia for sure, 100%. वहाँ पे आप एडिलेड में देख लो, when you got all out for 36, you had an issue with the swinging delivery with the extra bounce. So I think it's going to be the same problem this time around. Sorry, अपना light almost गिर गया. Sorry about that. Mooks are already treating it like rubbish. Sorry, it was not the style that you wanted, right? You wanted the big one. But absolutely, New Zealand, incredible performance. They played so well. बेहतरीन क्रिकेट खेले. गौतम गंभीर भाई बोल रहे थे कलकत्ता को जिता दिया, ये वो, दिस इज अ डिफरेंट ग्रेवी, दिस इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, दिस इज टेस्ट क्रिकेट, ही हैज हिज वर्क कट आउट, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म उसके ऊपर भी, देयर विल बी क्रिटिसिज्म ऑन रोहित शर्मा's कैप्टनसी, रोहित शर्मा द बैट्समैन, विराट कोहली द बैट्समैन, इट्स अ बिग वेक अप कॉल फॉर इंडिया. ठीक है, it's fine, you lost a series after a long time, but the manner in which you lost, got smashed in Bangalore, got smashed in Pune, there was not much competition. You cannot blame KL Rahul, you cannot blame Mooks, you cannot blame Chai, you cannot blame Coffee. It is like what happened in the ground, it was not good enough, and you need to do much better going into Australia. And they should add one more thing, the tactics. Chai से पहले क्या performance था, Chai के बाद. Yeah, and we were all talking about the dominance at home. Here it wasn't like they weren't even competing. It felt like they just got outplayed in every department. Rohit Sharma said it in the press conference. He said कि भाई they just outplayed us. उन लोग dominate करे. The way they played, हम लोग जैसा चलाते थे गेम इंडिया में, उन लोग वैसा चला दिया अपने अगेंस्ट बैंगलोर में और पुणे में भी. देखो बैंगलोर में आप बोल सकते हैं वन ऑफ फेज, लाइक अच्छा ग्रीन पिच है, थोड़ा बॉल स्विंग हुआ एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे तो आपके कंडीशन से आपको यही पिच होना था. एंड फिर भी लाइक अगेन ही ऑल्सो मेंशन्ड कि जो उन लोग की बैटिंग थी फर्स्ट इनिंग्स में, इट वाज नॉट गुड इनफ. 250, I think it was a good job. They restricted New Zealand after being 200 for 3, but then after that, the way India batted, I think it was rubbish, man. कोई भी अच्छा नहीं करे. Second innings में अभी जायसवाल अच्छा कर, पर उसको क्या बोलते हैं, like false hope, right? Like he just came, scored a few runs, 100 for 1. It looked good, but it was not going to take you anywhere. Follow the road map, like that's what it is. Again, like maybe, and again, this left-right combination के पीछे भागने से अच्छा पहले आप get your basics right. I think you're too behind left-right, left-right, like left-hand combination. Only match bowled will Ajas and Philip were only Mitch bowled well. Mitchell Santner, Ajas. Yeah, Mitchell Santner side strain के साथ bowling कर रहा था. He was injured and he was bowling with an injury. I think he bowled really well. उन्हें बीच में first if you saw Rangana Herat was there. He's a part of the New Zealand team for that Afghanistan tour, Sri Lanka tour, and now the India tour. उन्हें भी उसको tips दे रहा था. They were discussing. So constantly, even after taking 5-6 wickets, he was still looking to improve. कैसा plan करना है each batsman के लिए. And भाई वो run out भी क्या था? Like I cannot afford a run out like that when you're chasing 350. It happened with Virat Kohli in Adelaide, if you remember, in the pink ball test match. Rahane ko he sold him down the river. It happened with Rohit Sharma and Virat Kohli in 1 day before, and now it's happened again. It was both their mistakes. Virat Kohli, it was a wrong call, and Pant should have said no. He started and then it was Kohli's call, and then Pant, and then with Kohli. Kohli cannot play spin. I don't know what has happened. Yeah, I mean, Faiz, if you want to elaborate, we all talk about the other batsmen and everything, but Virat Kohli, जो star player है अपना, Indian conditions में against spin, when is the last time you saw him score 100 on a ranked turner? Yeah, I mean it's been some time now. I think Virat Kohli का वही आप बोल सकते हैं कि maybe he's low on confidence. He's not got runs in that in this part right now. India has been struggling. नहीं अरे फिर वही हो जाएगा ना. ऐसा stick together. Yeah, he's been struggling quite a lot in India. Sorry, हमारी ये vertically चला उठे, not horizontal. पूरा YouTube का update हो गया, so that's why we're struggling a bit with the dimensions. But anyway,
विराट कोहली का Struggling, even देखो everyone भाई is struggling. लाइक वीव सीन हम ताइजुल से बात कर लिए हम अब मिचेल से भी बोल रहे हैं इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम आई थिंक द फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी इज गॉट एडमिटेड आई थिंक विराट कोहली नाउ हैज टू एडमिट दैट ही हैज अ प्रॉब्लम विद द लेफ्ट आर्म स्पिनर he's got to really work that out we saw that outside You're saying this? outside Are of you sure? fooled by the numbers और उसको अब कैसा भी घुसा दे रही टीम में विराट कोहली को घुसेंगा उन्हें अगेन उसका स्टैचर Domination है आप ऑस्ट्रेलिया में विराट को लेके नहीं जाएंगे क्या नहीं लिख जाते कैसा नहीं ले आते हम एग्जैक्टली ऐसा नहीं लेके जाते वही बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया कैसा भी तो वही तो बोल रहा हूँ, है, कैसा भी डर घुस जाएगा ना ऑस्ट्रेलिया में भी घुस जाएगा उधर भी ड्रॉप करके ऐसा नहीं है कि नहीं करे इसको दो कहाँ ड्रॉप करे नहीं यार उन्हें वो ही वाज ऑन लीव हाँ तो खैर जो भी है because he was having a kid right and then again Sarfaraz was having no kid. one else was doing as good as him right like वो मतलब no one's outing I agree but मैं वही तो I agree but उसको कैसा भी डाल दे रही टीम में बोल रहा हूँ batsmen in India do you think all of them have a problem with spin I think a lot of them do an amazing I think a lot of them do but I think Rohit Sharma is good against spin I think Rohit's not been able to get out but he's not facing the spinner Sarfaraz So, is good. Sarfaraz I think is a decent player of spin Jaswal is good but I think Virat Kohli has been very poor I think KL Rahul has been not poor hitting in your sweep shots he's not hitting like the confidence नहीं रहा उसका हाँ, like, वो मगर आप देख सकते हैं I mean, अब उन्हें कैसा भी खेलेंगे वो मुंबई के टेस्ट मैच में विराट कोहली yeah he will उसको ऐसा वैसा करके हाँ they won't drop him they won't drop yeah him. I agree with your point Vinay only Jaswal shows intent in batting correctly and it's not even about intent it's also about I mean it is about intent 100% sorry about that but it's also about technique man the technique is not there it seems against spin they're not being able to smother the spin you see how Rahul Dravid Sachin Tendulkar Azharuddin उन लोग कैसा खेलते थे स्पिन को वो मेरे को दिख के नहीं आ रहा Yeah, Sarfaraz crumbled under pressure today. No, see, Sarfaraz delivery was like very low. I mean, उन्हें खड़ के इसलिए 2 सेकंड 4 सेकंड it bounced very low. He didn't expect that thing. And देखो भाई, you can't completely blame Sarfaraz अगर वो ये defeat हुआ अभी तो it's like again collective thing. Look at the first innings, we didn't bat together as a unit. The second innings, the same thing. सरफराज के लिए कुछ बोले तो पूरे दिन ठहर जाते भाई I agree it's a collective thing but just the people who always blame KL Rahul for you guys it's a collective thing even when he's in the team it's a collective thing I agree 100% what Faiz said what Rohit Sharma said it's Ashwin also he got outshunned by He was the Santner Ajaz Patel of this team. by Santner फोड़ के रख दिया like you know He was the Ajaz Patel of India. Ashwin got like I don't know Bangladesh he was amazing but in this series he was below average Bangalore में भी हम लोग देखे उसको he was not bowling to that level Jadeja was below average only Washington Sundar was the one who bowled well in my opinion I think India bowled poorly especially in that third innings Not able to find the areas and I think सुबह में जब Jadeja finally managed to find the rough area he got through as you could see it was made for him it was not कि भाई ये अब हुआ है 2-3 दिन से भी ये you know rough patch था आप बस उस पे बॉल डाल नहीं पा रहे थे so that's the only thing I think shameful dominated by Mitchell Santner who last bowled a good spell in test cricket 9 years ago Yeah, I think this is what's going to happen on these kind of turners. You will have bowlers like this will come. You remember Joe Root picked up 5 firsts in India. So you will have players like that. But you have to give credit to him. I think the way Santner actually in all formats has been amazing for New Zealand. अगर आप देखें पिछले 1-2 साल में जिस तरीके से उन्हें क्रिकेट खेल रहा है उसलिए उसको वाइस कैप्टन भी बना दिया जैसा फैज बोल रहा था. His bowling variations outstanding. Even in T20 and one-day cricket, he's really good. He can control the game with the ball. I think he's outstanding. His variation in pace. That Virat Kohli one, he said himself like tongue-in-cheek, bro, I didn't expect Virat Kohli to miss a full toss, but it was flighted. There was a hint of change in pace. I wanted to ask Vinay because Vinay is a very good spinner. I was speaking to another friend of ours who's an excellent upcoming spinner as well. He was talking about Ashwin ka jo bowling tha. A lot to do was because of the field placement. If you see deep point and cover was taken, like point was taken, तो वहाँ पे single जा रहा था and they were rotating the stripe. I think it was Latham and Will Young batting, or it was left hand, right hand at that time, and that kind of messed with Ashwin's line and length. So Vinay, let me know what your thoughts are on that because क्या हो रहा था for that reverse sweep and that because normally an off spinner can get wickets when the ball is turning. We have to hit against the spin. You can get wickets in catching and point, but they weren't able to do that because Rohit took the field deep, like the point and the cover and everything. So let me know what your thoughts are on that. KL Rahul is part of the problem, not the entire problem. Average 33 and exactly, and I completely agree with that. But people are saying he was the problem. He's not the only problem. He's part of the problem. There's a lot of problems. He's not.
Having big hope on Bumrah, but next one who to choose? Bumrah के बाद बुमराह ऑस्ट्रेलिया में चल जाएगा. Let's just enjoy Bumrah till he's there and then someone will eventually come up. अभी तो अपन उतना आगे सोचेंगे नहीं, पहले तो दिसंबर तक सोचेंगे. Okay, दिसंबर में क्या होगा? Because you need to win 4-1 and or 5-0 to maintain your stance in the WTC. So that's going to be even a very Bumrah was tough outclassed challenge. in this series by Sadi and O'Rourke. I think they had a much better series than him. Yeah. Much better. तो अब ऑस्ट्रेलिया में देखना पड़ेगा how he comes back. But this is how you want to learn, right? Like अगर if you keep winning everything, आप सीखेंगे नहीं. यहाँ पे it's a wake up call. Maybe you went to Australia over confident. वहाँ पे 5-0 अगर हार गए तो it would have been even. नहीं वो सिर्फ जब का जब देखना है इसलिए तो बोल रहा हूँ. Yeah, तो अभी like I think this like they have to learn from this. अभी क्या सिचुएशन है WTC का? दिल भी अभी तो इंडिया इज ऑन टॉप स्टिल. आई थिंक 62% टू ड्रॉप डाउन हो गया वो लोग अलोंग विद ऑस्ट्रेलिया. जस्ट पॉइंट्स का फर्क है, लाइक डेसिमल्स का फर्क है. उसके बाद आपकी साउथ अफ्रीका है, सॉरी श्रीलंका है, उसके बाद आपकी साउथ अफ्रीका है. साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका नाउ आर प्लेइंग टेस्ट एज वी स्पीक. So that's going to be interesting because South Africa जीती then they put a big step forward as well. So अगर इब्राहिम भाई जो बोले थे 4 जीतना out of 6 या 5, India is not qualifying then if that is the situation because beating Australia. You have to wait for the results of the other teams also to follow through. So we really can't make a whole कि भाई 4-1 है या 5. अभी तक जो situation है is close. I don't see India winning 4-0 3-0 in Australia. वो तो मेरे हिसाब से नहीं होगा. पावरफुल टीम है भाई ऑस्ट्रेलिया. विराट कोहली is treated as a demigod. Virat Kohli is treated as a demigod in India because of his previous achievements. He is like Rajnikant, Chiranjeevi and Pawan Kalyan of Indian cricket. If you say something, his fans will attack you. Yeah, 100%. I mean, to one extent that's right, but again you have to understand that what he's done also and what he does. I mean, it's not a demigod of the past. Again, you look at this. If he does good, we appreciate it. T20 World Cup final. No problem. He was the one who came through and then like everyone was praising him. So It's just that there should be. It's not as consistent as it used to be. I agree with that. Like जो level के उसके performances आते थे from 14 to 17 maybe, and then उसके बाद से थोड़ा बैठ गए formats में. But I would still say that now and then he still gets to that win, you know. So I think we've got to appreciate that. Yeah, that's the thing. When he doesn't do well, like Mok sir, जब उन्हें अच्छा नहीं कर रहा उसको criticize करना बिल्कुल जायज़ है. उन्हें जब अच्छा कर रहा है आप praise कर सकते. Because हम like you know श्रेयस अय्यर को मैं गिन देता हूँ बिना like वैसा like I'll just like say this guy. No, even his batting and stuff. I'm not a huge fan. Bro, his captaincy. What can I say? He's incredible. Like his captain, like he's won. Like I can't say anything, but I don't really like him as a player. I'm not a big fan of his batting or anything. मैं गिन देता हूँ. फैज़ केएल राहुल को गिन देता. मोक्स किसी और को गिन देता. Everybody. So like I think at times like even the big players we have to criticize them if they don't do well. Like विराट कोहली आप जितना भी जिम जाओ जितना भी स्क्वाट्स करो अगर आप रन नहीं बनाएंगे कुछ भी नहीं होगा, right? Like so and on the day when he does well we'll say incredible everything, all his fitness will come into it, but he's the fittest guy in India and he's not being able to play spin. So I would rather him play spin than going to the gym. इसलिए बोलते because a lot of hopes on him. Yeah, of course. And we love him. Like we're huge fans of him and everything. When he doesn't do well, we'll say it. Because a lot of hopes are there. Guys, Siraj is now suitable for coming Australia series. Siraj is like Siraj के लिए conditions नहीं है. Siraj की bowling अगर आप देखो over here, he has pace. He needs swinging conditions and he can reverse the ball. I mean, you can still play him on a flatter track. He'll not get you wickets. The only way he'll get you wicket is playing mind games with the batsman या अगर reverse होना शुरू हो गया बॉल वो सिचुएशन में ठीक है. सिराज आपको काम आएंगे ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में. भाई पेस है उसके बाद 140 प्लस. But first, I would beg to differ. I think Siraj had an amazing record in India. अगर आप उसका रणजी ट्रॉफी देखो उन्हें जो रिवर्स कराता था initially when he came to the Indian team, he was outstanding in Indian conditions. He was really good. भाई जो comment कर रहा है based on latest जो you know उनके सीरीज गए हैं, he's not picked up like. But even if you see something 2-2, but those are important. But even if you see in the World Cup, apart from Sri Lanka, he didn't have a great World Cup, right? Like it was Shami and Bumrah. He didn't have. तो उसका है performance का कुछ. India 23 World Cup. मेरा क्वेश्चन है कि मेरे क्वेश्चन है आप लोग से कि अगर विराट कोहली टीम में नहीं है और सिराज इज प्लेइंग ओके तो उसका परफॉर्मेंस वैसे ही रहेगा या गिर जाएगा? नहीं उसका ऑलरेडी गिर रहा विद विराट कोहली प्लेइंग. सिराज का ब्रो नहीं ऑलरेडी कहीं ना कहीं सपोर्ट है. नहीं ऑलरेडी उसका विराट कोहली के साथ भी गिर रहा है. सिराज का है थोड़ा बताइए. इंडिया का तो मैं बोल सकता हूँ यस ही इज नॉट दैट इफेक्टिव, बट अगर बाहर आप लेके जाओगे आई थिंक स्विंगिंग कंडीशंस अ लिटिल बिट ऑफ बाउंस ऑन अ पिच ही विल बी अ लिटिल बिट मोर इंपैक्टफुल देन व्हाट ही इज ऑन दीस पिचेस. बट आई थॉट ही वाज मच मोर इंपैक्टफुल ऑन दीस पिचेस बिफोर लाइक एज कंपेयर्ड टू नाउ ऑन दीस पिचेस. और आप उन्हें ओल्ड बॉल के साथ अच्छा रिवर्स करता था, न्यू बॉल के साथ 1-2 विकेट ले लेता था. इवन इफ ही bowled like 5 to 10 overs in a match, he used to pick up a couple of wickets. If you remember, just like last year, the year before, in Indian conditions, even if you see his Ranji Trophy performance for Hyderabad, he got into the team because of his red ball cricket. IPL में उतना खास नहीं था. When he moved to RCB and Virat Kohli is backing everything, ठीक
ठीक है, but his red ball cricket in India in Indian conditions is really good. So I feel there is a drop in Siraj's bowling. Yeah, I mean Of course, even I agree with but again मैं वही बोल रहा हूँ कि इंडिया के हिसाब He has to बिल्कुल come back, है. huh? He has to come Yeah, back. yeah, He'll come back well in Australia because those conditions will suit his bowling. अब जो हिसाब से है उसकी hopefully unpopular opinion but a home series loss was long due after the performance of the top order and over dependence on Ashwin and Jadeja since a long time. I mean we were speaking about this yesterday as well कि हम बोल रहे थे कि भाई ये लोग की जो बैटिंग है कहीं ना कहीं छुप रही थी बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेस ऑफ अश्विन एंड जडेजा. जी बिल्कुल. एंड उन लोग बैट के साथ भी निकाल रहे थे. यू नो अगर आप देखो बांग्लादेश इंग्लैंड सीरीज भी देख लो, वहां पे अक्षर पटेल, जडेजा और अश्विन के कितने की नॉक्स है, जुरेल. सो लोअर ऑर्डर आपको काफी दे बेल्ड यू आउट अ लॉट ऑफ टाइम्स. आई थिंक if you see even in this series, because the lower order couldn't perform, you just got all out. But even in the past series, the top order was not performing, in my opinion. Like Shubman Gill did get hundreds, Rohit Sharma did get, but the consistency that we normally used to, we weren't seeing that. But let's just hope that they get into form. We need the top four to perform at least. In a series, we need like 200-300 from the top four. Nihal, just saw the Pant run out. What a brain fade. Yeah, I mean it was disappointing. I mean Virat started and Pant followed through, no communication between each other. What was that, man? अंधाधुन So भाग गए childish दोनों. thing. And I think good take by Blundell and he was quick with his. सौरभ कहाँ से हो तुम लोग भाई? आपके दिल चीर के देखो, आप हम लोग का नाम लिखा होगा आपके. We are from Hyderabad, so. Dorimona. Yeah. I miss Pablo Bhai, aka Umesh Yadav. He was lethal in Indian conditions. Yeah, Umesh Yadav was great. Indian conditions में away he used to struggle. Indian conditions में he used to get the ball to again swing a lot. I remember that pink ball test match बांग्लादेश के खिलाफ जाके उन्हें पूरा wipe कर दिया था बांग्लादेश टीम को. And even the other matches against New Zealand, Australia, South Africa, Umesh Yadav was really good with the old ball. Yeah, बिल्कुल सही बात है. But 2-0 now, third test. I mean I don't know how much of a difference it makes if you win this. It does in the WTC table. It does. So Yeah. you need to win this one. अगर ये हारे तो और प्रॉब्लम हो जाता है आपको. ऑस्ट्रेलिया जाके और 5 मैच जीतना पड़ेगा. पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत स्ट्रांग ही है. Yeah, I mean again Tom Latham Mustafa, incredible. नहीं था यहाँ पे इसका रिकॉर्ड, बट इंडिया में आके सीरीज जिताना एज अ कैप्टन, नॉट अ लॉट हैव डन इट एटलीस्ट इन द लास्ट 12 years. फैंटास्टिक बैटिंग. वो 86 जो मारा उन्हें भाई, एंड वही इंटेंट जो हम बात कर रहे थे कि भाई एग्रेसिवली मारा, इट वाज़न्ट लाइक सुन करके मारा. He was brilliant, man. I think you got to credit the way he used his bowlers. He went up with Santner से कोई फिकाया, एजाज पटेल को रोटेट करा. ग्लेन फिलिप्स की भी बात करो आप लोग. ग्लेन फिलिप्स जिस तरीके से सनराइजर्स तो खिलाए नहीं उसको, लेकिन ग्लेन फिलिप्स मैच Latham की captaincy, I think outstanding. He was really good. He was backed by his players. He was calm on the field, always supporting them. बात कर रहा था, field placements उसके बहुत अच्छे थे. Glenn Phillips is probably one of the most improved bowlers I think in cricket because he's always a good batsman also. He's a man. He was in the mood today in the end. उन्हें जडेजा को सिक्सेस मार रहा था. अगर वो रन आउट नहीं होता था, I don't know how much. जब आप फिलिप्स को देखते थे, दिखता T20 player होने, right? Like but the way he's developed his bowling and he's become a test cricketer now. Batting भी उन्हें कर सकता. I think he struggles a bit against spin. Maybe that's why Sunrisers weren't playing him. लेकिन if you give him a flat pitch in Hyderabad, I think he'll smash it. I think Glenn Phillips, the way he's improved as a bowler, one of the biggest improvements. Santner, I always knew he was a good bowler, but this guy Phillips, I always thought part-timer ने जो root type bowler है, but he was so good. But even not only in this series, आप श्रीलंका का भी सीरीज उठा लो, इससे पहले जो न्यूजीलैंड टूर करे थे, बहुत जबरदस्त था. इसका एक सवाल है, रोहित should resign from test, bring पुजारा and Rahane back to test. ये सरफराज ये सब इंडियन कंडीशन के लिए हैं, बाकी सेना कंट्री के लिए पुजारा और रहाने कुछ. वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप उन लोगों को अब खुदाफिज बोल दिया, वापस लेके अगर आएंगे देन यू गोइंग बैक, यू हैव टू लुक टू द फ्यूचर. आपकी बात सही है कि रहाने एंड पुजारा आर मच बेटर इन ओवरसीज कंडीशंस, बट दे आल्सो हैव अ टाइम लिमिट, राइट? व्हाट द 35-36 नाउ. उन लोग भी फॉर्म उन लोगों का ज़्यादा. आप पुजारा को देख लो, ही प्रिपेयर्ड फॉर द WTC फाइनल इन इंग्लैंड बट ही स्टिल वाजंट एबल टू परफॉर्म इन दैट मैच. रहाने स्ट्रिंग ऑफ पोर परफॉर्मेंसेस बिफोर ही वाज ड्रॉप्ड. सो आई थिंक आपकी बात सही है, लेकिन नाउ इट्स टू लेट फॉर मी टू गो बैक टू द. इसी बात आने पे अब एकदम से you can't always go back to रहाने एंड पुजारा. बोलते हैं हर मर्ज की दवा जैसा है वो ऐसा नहीं. नहीं, मगर उन लोग की परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही थी, राइट? इसलिए तो ड्रॉप करे. उन लोगों को लेके गए और फेल हुए, तो आप लोग ही बोलोगे क्यों लेके गए, क्यों लेके गए? आप बोलते थे फ्यूचर देखना. और यही बात इस बात के वजह से राहुल इन लोग से वापस आप जाते श्रेयस अय्यर को, बिकॉज जो नई लॉट है उन लोग वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते. संजू सैमसन रहे
रहने भाई, दो, बहुत talent है भाई। सरफराज रहने दो, लोग वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे, इसलिए एवरीवन गोज बैक टू रहाणे, पुजारा, राहुल, श्रेयस ऐसा है वो अय्यर. एक दाना हाँ, डालते, रमेश पवार एक also. मैच डालते, एक दाना डालते, उसके बाद आप हाँ, वो बोलिए। निकाल लेते हैं उनको. उसको भी डाल अगेन सकते नॉट हैं। फेयर ऑन देम, उनका डाल मौका सकते है. हैं। लेट्स नॉट गो बैक टू द पास्ट एंड गिव इट टू द भाई. यू वांट गो बैक टू युवराज सिंह T20 नहीं जीत रहे, एक बात बोल रहा हूं. सो इट्स लाइक दैट. हु इज द थर्ड सीमर आफ्टर बुमराह सिराज फॉर यू इन द BJT? आकाशदीप. आकाशदीप का कंट्रोल नहीं हुआ यार, वो एंड में शॉट मार के सीधा Yeah, he gave straight. आपके पास दूसरे ऑप्शंस कौन है वो? कृष्णा है Yeah. आपके पास Prasidh Krishna is not a bad option if he's fit. If he's not fit, then yeah, again injury prone है उन्हें. कौन है आपके पास? काफी सारे प्लेयर हैं. अरे एक दिन खराब होने से कुछ नहीं होता भाई. एक दिन खराब हुआ बोल के मैच हार गए. एक दिन खराब नहीं हुए, एक दिन उनका भी हो सकता है, उनसे अपने को कुछ करना नहीं है. अपना पहले तो स्ट्रीक खराब हुई, उसके बाद अपना WTC का जो टेबल है उसमें ऊपर नीचे हो जाता मगर एक दिन की बात नहीं है सर. 5-6 दिन आपके खराब हुए. बैंगलोर से हम लोग देखते जा रहे, वहीं से चल रहे खराब. 10 दिन हो गए. या लाइक अच्छे दिन आए ही नहीं अभी. लाइक ठीक है, आई अच्छी अग्री. अच्छी बात है आपकी. अच्छी, वी रेस्पेक्ट योर थिंग. Yeah, no, no, एक दिन का नहीं है वो. या आप जो बोल रहे हैं ठीक बात है कि इट्स वन सीरीज एट होम. 12 साल में यूर अफोर्ड टू लूज. रोहित शर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई ये तो बनता है, एक बार हम हार सकते हैं. बात बिल्कुल सही है, बट वी स्टिल हैव टू एनालाइज इट एंड सी कि कहाँ गलती हो. बिकॉज जब इंडिया जीतती हम लोग सब रोड पे आ जाते, सेलिब्रेट करते, ये करते. हारी तो वी विल नो, जैसा वानखेड़े में ऐसा बाहर ऐसा कर रहे थे. अब जो सेलिब्रेशन होते हैं एयरपोर्ट पे, वो रोड पे ही तो थे. नहीं वैसा नहीं कुछ. खैर मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं थे रोड पे. अपने जो वैसा बोल रहा था. हार का भी टाइम है. हाँ. आप वो देखो, या तो ऐसा है कि WTC में हार रहे हैं आप. हाँ. जो आपके बुरे दिन है वो ऐसे बड़े दिनों पे बुरे दिन आ रहे कि वो बुरे दिन रहे तो घर में बैठना है. हाँ, अच्छे दिन WTC रहे तो वर्ल्ड कप आप हारे. 23 का बुरा दिन था, वो एक ही बुरा दिन था. तो बुरे दिन का भी जो मौका है जरा एक अच्छे टाइम पे ढूंढो ताकि वो बुरा इतना बुरा इम्पैक्ट ना करे. तो अभी आज जो बुरा दिन आ गया उसमें WTC ऊपर नीचे हो गया. WTC हार गया आप वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओवल में. फिर आप वर्ल्ड कप 20, चलो एक अच्छा दिन आ गया आपने को T20 वर्ल्ड कप में, तो वो भी एक बुरा ही दिन था ऑलमोस्ट. नहीं बिल्कुल ठीक है. लाइक आई मीन होम कंडीशंस में आप बहुत डोमिनेट करें 10-15 साल, बट दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द फॉर्म यू वर इन. आप एंड ऑल्सो द WTC वाज ऑन द लाइन. आपको ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, सो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप 2 मैच हार जाएंगे बैक टू बैक. सो ऑफ कोर्स बैकलैश तो रहेगा थोड़ा बहुत, बट होपफुली विद इन लिमिट्स. या बिल्कुल. फिर I think we can do well in Australia. Because there are a lot of out of form batsmen in Australian team too. What Australian team? I think we can do well against Australia because उनके पास भी बैट्समैन फॉर्म में नहीं है वो, like Smith and stuff like that. They're not in good form, so we can also do well. But at least for फॉर्म में नहीं है वो. नहीं, खुश होना है. उन लोग आ जाते फॉर्म में. ना यूनिफॉर्म पहने बाद फॉर्म में आए थे. बिकॉज उन लोग वो खेल रहे रेड. अभी प्रैक्टिस चल रही है उनकी. प्रैक्टिस क्या, शेफील्ड शील्ड चल रहा है वहाँ पे, डोमेस्टिक क्रिकेट. दे आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर इंडिया एंड फॉर देम दे डोंट केयर अबाउट द WTC. हम लोग 10 बार WTC बोल दिया यही शो में. उन लोग दे डोंट गिव अ क्रैप. दे जस्ट वांट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी. दैट्स व्हाट दे वांट. उन लोग WTC बाद में देख रहे. आप देख लो. हाँ, उनके पास ऑलरेडी है. एंड उनके पास ये नहीं है राइट. ये टीम जो है 2 बार लगातार हार चुके हैं. कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, दे लॉस्ट टू इंडिया ट्वाइस एट होम. सो दैट्स द मेन थिंग ऑन देयर माइंड. आई डोंट थिंक दे केयर अबाउट WTC राइट नाउ. दे ओनली लुक एट इट आफ्टर. आप देख लो कमिंस का इंटरव्यू था विद द ग्रेट क्रिकेटर. मैं मोस्ट आपको दिखा रहा था, याद है वो पॉडकास्ट सेटअप. तो वहाँ पे भी हंसी मजाक चल रहा था, बट ही वाज वही, यू कैन सी दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिया कमिंग एंड एवरीथिंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. Yeah, 100%. As long as Ajit Akarkar remains chief selector, Rohit will remain captain. He made many mistakes in these 2 matches. He needs to take criticism seriously. रोहित के ऊपर देखो, बिल तो आप ठीक है फाड़ो, मसला नहीं है, बट again you have to. He's also part of the game. He's also part of the problem. But your batsmen are I think not coming through. It's not a Rohit Sharma problem. आई थिंक जो Your स्पिनर को bowlers लेके आया are उन्हें, doing well. जो बहुत खुश हो गया था, बस बाद में साटनर का जो परफॉर्मेंस देखा फिर खामोश बैठ गया. नहीं, रोहित शर्मा का ये गेम में कप्तानी खराब थी, वो तो बात सही है, बट ओवरऑल ही इज डन अ गुड जॉब राइट. इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्हें बच्चों के साथ जीता था, वो इट वाज डिफिकल्ट. वो बांग्लादेश सीरीज में हाँ वो कानपुर जीता, तो ही इज डन वेल एज वेल. ये मैच में पर्टिकुलर उसकी कप्तानी खराब थी, बट ही हैज टू इंप्रूव ऑन दैट. यू हैव टू सैक हिम, यू हैव टू किक हिम आउट. बट यस, उसकी फील्ड प्लेसमेंट बहुत ऑफ थी. बॉल 1 से आप देख लो, डे 1 पे जब आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, आप लॉन्ग ऑन रख दिए, पॉइंट रख दिए, डीप एक फाइन लेग, स्क्वायर
like you're playing with a defensive field, so वहीं पे उसकी field placement गलत थी, and he looked lost, especially in that third innings. I think his captaincy was poor in this match, but overall I think he's done a good job like so far. रोहित 4 इनिंग्स में बिल्कुल फ्लॉप गया है। रोहित भी का भी एज हुआ है, उसको क्या मौका मिलता है, वो कैप्टन है, इसलिए रिसेंटली पुजारा प्लेड गुड इन डोमेस्टिक, उसका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं दूसरों का। फर्स्टली रोहित शर्मा का एक 50 है ये सीरीज में। सेकेंडली पुजारा 3 महीने काउंटी खेलने बाद WTC फाइनल में आया था, आपको याद है मुस्तफा भाई क्या हुआ था उसमें? हाँ वो फेल हुआ था, वही बात है, यू कैन गारंटी। नो मगर पुजारा जो है आप डोमेस्टिक के कंडीशन में अगर आप, आई एग्री विद यू, पुजारा इज अ ग्रेट प्लेयर, रहाने ग्रेट प्लेयर्स, बहुत जबरदस्त है। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में तो पुजारा जैसा प्लेयर ही नहीं है, मगर लाइक फर्स्ट सेड यू हैव टू लुक टू द फ्यूचर। नहीं देखोगे तो आप जब भी बोलोगे अरे वही डबल वही पूरी होना मेरे को, वही पूरी वो नहीं हो सकता ना, बोल सकता है पुजारा की भी जब एज होंगी, चलो ठीक है आप बोल रहे हो एक आध सीरीज के लिए ला लिए, नहीं चला तो फिर देना। What Pujara has, which none of these guys have, is patience, which you need in Australia. In England, not necessarily, but in Australia, because अगर आप जब वो बॉल पुराना होता है, right, it becomes a bit easier to bat. उन्हें like 30-40 overs ठहर सकता है क्रीज पे, which I don't think any of these players can do. So that's what you'll miss from Pujara. But again, like first said, you can't go to the past now. It's खत्म हो गया। जैसे हम रोड पे आए थे सेलिब्रेट करने, वैसे ही हमारी टीम के खिलाफ रोड पे उतारने, टीम को मोटिवेशन देने उतारने पड़े। तो भाई अरे भाई आपको बशीरबाग बुला रहे शकील भाई, ये दोनों हैदराबाद के, मैं नहीं हूँ हैदराबाद का, तो उन लोग आएंगे लाइक बशीरबाग। ठीक है बंद करो। जब आएंगे चलो अभी चेन्नई में अपन अभी तेजल भाई बोले PGT में 3-2 से जीतना ही होगा, नहीं तो गया अपना WTC फाइनल। We'll have to wait again. देखो again, South Africa भी टेस्ट खेल रही, श्रीलंका भी टेस्ट खेल रही. We just have to wait for. We'll have to wait for the. No, but he says. We'll have to wait for the results of the other teams and again एक और टेस्ट है यहाँ पे. We'll just wait और मैच बाद में करेंगे. पहले मैच जीतना है, उसके बाद देखेंगे जो भी है. Cummins said pitches will be like bushes, stadium will be like a green jungle. Yeah, he said that. We have the Tarzan that can survive the jungle and. ये विनय का अच्छा पॉइंट था, because like वैसा अगर है pitches आप और ज़्यादा struggle करेंगे, like it will be very difficult. बॉल अगर घूमेगा वैसा, you know, but the only thing is that we also have bowlers. Hopefully, you know, Bumrah, Siraj, if Shami comes back, they can come and pick up wickets and attack. But वो conditions में आपके batting, हाँ, रहाने तो नहीं रहेंगे हमारे हिसाब से। रहाने के लिए बहाने ढूंढो लोग। राहुल को लेना चाहिए, ले लिए, अब क्या लेना चाहिएगा, ले लिए BGT में राहुल को। एंड देखो भाई राहुल को लेना इज देयर, ही हैज 100 इन इंग्लैंड, ही हैज 100 इन अफ्रीका, ही हैज 100 इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। सो ही इज गोइंग टू बी द नंबर 5 रोल। कितने लोग खेल रहे हैं अभी? सरफराज होगा, ये KL राहुल होंगे, और कौन है मुस्तफा कि नंबर 5 खेलेंगा ये स्क्वाड में? हार्दिक पांड्या भी नहीं है, आप नीतीश रेड्डी नहीं है, नीतीश भी नहीं है आई थिंक स्क्वाड में। He's in the squad, right? Is there? Yeah, BGT में है नीतीश रेड्डी। ठीक है, तो नीतीश रेड्डी भी है, बट उसका आप लेके खेलोगे नहीं खेलोगे वो फिर सोचना पड़ेगा। सो आई विल जस्ट हैव टू वेट एंड सी। भाई तुम अगर सिर्फ एक मैच WTC के बाद ले आओगे तो उसमें भी रोहित कौन सा खेल लिया? कम से कम ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतना चाहिए, रहाने का होना बहुत ज़रूरी है। ये जो KL है, ये रहाने का KL है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। कौन? सौरभ भाई बोलते सौरभ भाई बोले भाई अगर तुम सिर्फ एक WTC का मैच ले आओगे तो उसमें रोहित भी कौन सा खेल लिया? कम से कम ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतना चाहिए, रहाने की होना बहुत ज़रूरी है। ये जो KL है सबसे बड़ा फ्रॉड है मेरे हिसाब से। तो नहीं है फ्रॉड। देखो अगर आप रहाने को लाओगे और फिर आगे जाके क्या करोगे? फ्रॉड क्या है समझ में आ रहा? मेरे हिसाब से नहीं है फ्रॉड उन्हें, बट भाई उसके साथ जो है उन्हें तो ड्रॉप तो कर दिया रेड KL राहुल को। अब उन्हें नहीं आता टीम में, अगर आप जीतेंगे उन्हें नहीं आएंगे टीम में, मगर जीतो अगले मैच आ जाएंगे मगर जीते नहीं। हाँ एग्जैक्टली, तो वही तो है। देखो अगर आप KL राहुल को उसके बिना जीत जाओ KL राहुल को आप अगर उसका क्या बोलते हैं उसका टेस्ट रिकॉर्ड या जो भी रिकॉर्ड निकालो, देखो भाई उसका मुस्तफा जैसे बोला कि भाई ही इज नॉट बीन गिवन अ रॉन्ग रोप, बट अगेन उसको एज अ स्केप गोट या उसको बलि का बकरा जो बोलते हैं, सही ना, बलि का बकरा अगर बना दिए उसको कि भाई टाइम खराब चला KL राहुल, अच्छा चला KL राहुल, राहुल को डाल दिया, उन्हें तो टीम में है ही नहीं। KL राहुल तो टीम में है नहीं, जैसे मुस्तफा बोला। एंड अगेन सी ही इज बीन स्ट्रगलिंग विद फॉर्म, आई एग्री विद दैट, ही इज स्ट्रगलिंग टू गेट रन्स अंडर हिज
बैट ही डजंट लुक बीच में हार्दिक पांड्या था। एशिया कप में उसकी जाके शक्ल IPL देखो में। आप, एशिया कप में अलग कॉन्फिडेंस पे था, अभी लेटली अगेन इंजरी से आया, इंजरी से वापस आया, ही नॉट बीन लुकिंग द ग्रेटेस्ट फॉर्म, बट हु इज, सवाल वो है कि कौन है नंबर 5 पे, आप देखो कोई भी, सरफराज मारा 250, चलो ठीक है। आपको अभी तो नंबर 4 पे भी प्रॉब्लम हो रहा। अब नंबर 4 पे भी प्रॉब्लम हो रहा विद विराट कोहली, सो यू गॉट टू आल्सो जस्ट लुक एट एवरीबॉडी। जब अपन एक की बात करें, आप ऊपर वालों को भी देखो, नीचे वालों को भी देखो, everyone has, no one has run. What I'm worried about Only is Jaiswal is the one who has consistent. he's the one I'm worried about the most. And Who, Jaiswal? Yeah. what about Why? They're gonna pepper him with short balls, bro. What Forget, about like, it's- Shubman? What's your belief there? I think again he needs to convert those starts that he got today, but he looked much better than before. I think he looked much better. He looked like he can score runs. उन्हें partnership अच्छा लगा रहा था, but you have to convert those ना once you. श्रेयस के रन आए, ना केएल के रन आ रहे, चलो ठीक है, ना सरफराज के रन कंसिस्टेंटली आए। सरफराज खेला ये इंडियन पिचेस है, बाहर जाके we don't know what is recorded. Just what we don't know. Jaiswal- Just what South Africa he got murdered. Yeah, he got murdered in South Africa. Yeah. Rohit Sharma, चलो ठीक है, very bad patch. Virat Kohli again a bad patch. Even in South Africa, he got some runs in South Africa. Maybe like a 50 odd, yeah. So, and that again KL Rahul के साथ पार्टनरशिप थी उसकी। Point ये है कि भाई it's not one guy that's struggling with the bat. We're saying India is batting right now. Yeah, everybody what we is were saying in struggling. 2022 that the bowling was struggling us. So it's role reversal हो गया मसला इंडिया का। हाँ, I think everybody is struggling. पूरे जो टीम है आपकी। आप जडेजा को देख लो, आप हाल में ये 230s आए उनके, उससे पहले The only guy who has done well consistently for India in Test cricket in the last 2-3 years is Rishabh Pant. He's the only guy, and he is the one who's most unlikely to be consistent because उन्हें जिस तरीके से खेलता है उन्हें कभी भी आउट हो सकता है. But he's the only guy who's played consistently in all conditions. ऑस्ट्रेलिया में 100 है, इंग्लैंड में 100 है, उसका साउथ अफ्रीका में भी 100 है, इंडिया में भी उसके 100s है. He's batted better than Kohli, better than Rohit, better than Rahul. He has runs everywhere. Unfortunately, he had an accident, so he didn't play for a bit. पहला था पर मतलब सरफराज खेला नहीं, राइट? वही खेला था पर 150 यार. ठीक है, मगर अब देखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में. अगर ऑस्ट्रेलिया में उसका एवरेज लाइक 40-50 है, देन ऑफ कोर्स मैं एग्री करता हूं. पंत इज द ओनली गाय, उस पे भी लोग चढ़ जाएंगे बिकॉज अगर उन्हें फेल करा ऑस्ट्रेलिया में. बट ही इज द ओनली वन, इफ ही फेल्स ही इज ड्यू अ फेलियर, लाइक आई विल बैक हिम बिकॉज ही इज द ओनली गाय हु हैज शोन कंसिस्टेंसी फॉर द लास्ट 2-3 years. Is the current Sri Lankan test team better than the current Indian test team as they completely dominated New Zealand on similar type of turning wickets? It's a very good question, but I don't think so. I just feel that the like it was New Zealand were better prepared over here. They understood the conditions a bit more. Against Sri Lanka, they were undercooked. They went there without lack of preparation. Tak cricket khele nahi. They came here, and also India probably I think had their struggles. They didn't improve on, and they also did not expect New Zealand to come out like that. It's a good question. You have a point, but I don't agree that the Sri Lankan test team is better than the Indian test team. Spin and swing seam खेलना नहीं जा रहा है बैंगलोर में. You expect them to do well on those green pitches in Perth, Adelaide and MCG and Gabba. They did a couple of years ago. But I don't expect them to We do don't well. expect them, but you have to be like you can't go there and जब तक हम जाके मैच होगा नहीं वो बोल नहीं सकते. But let's just go with the politics in my head. Because over there, I think It's going to be bushy. it's gonna be difficult. ना तो कान like ये कानों पे डालें, बॉडियों पे डालेंगे, ये करेंगे. It's But gonna be yeah, I think difficult. जो अभी But- lot of kids हैं, they're more daring. Yeah, They're more and I daring. think a lot will depend on your bowlers how they perform as well. अगर आप ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में लेके आ सकते हैं with the ball, then you're in the game, and you have to catch well as well. You have to field well. It's going to be everything else. But I'm not expecting them to go and smash it in Australia right now, and I wasn't expecting last time also. I think Australia is always tough. ऋतुराज के साथ कोई 36 का आंकड़ा है क्या? बीसीसीआई के साथ कभी भी नहीं लेते इसको टीम में. आई मीन ठीक है, आई मीन दे विल गिव हिम चांसेस एंड थोड़े चांसेस पे नहीं खड़ा होता. 36 का आंकड़ा तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये चीज़ जो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक एंड पिच एंड द सिलेक्शन ऑफ टीम कैप्टन, एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ द गेम इन इट. आज सरफराज को इतना चढ़ा रहे थे मगर फिर भी मैच हार गया. Bro, he was not only the person, like सबकी बैटिंग का प्रॉब्लम चल रहा था, बट he did जबरदस्त करा उन्हें रेड बॉल के लिए 150 मारा. देन आई थिंक उन्हें आगे भी बहुत दिखाएंगे. अभी तो खेल स्टार्ट हुआ है उसका, ठीक है, यू कांट लाइक फर्स्ट मैच अभी तो भी मैच स्टार्ट हुआ है उसका, अभी तो बहुत लंबा जाना है. केएल राहुल देखो भाई साहब, हाथ खड़े करते हो और फिर उसको कहते हैं कि परफॉर्म करा, कैसा करेगा केएल राहुल. वो कोई जादूगर थोड़ी नहीं है कि हर मैच में वो खेल रहा नहीं भाई, उसका पिक्चर छोड़ो.
सपोर्टिंग कुछ भी कहते हैं लोग, फ्रॉड नहीं है वो, ही सपोर्टिंग KL राहुल। तेजस भाई सपोर्टिंग भाई KL ये राहुल। तो- बात सही है कि भाई नॉट अ मैजिशियन के उन्हें हर जगह छड़ी फैलाओ। सरफराज धोखा नहीं देगा, KL राहुल धोखा देगा। अरे I don't want to talk about the guys not even playing, bro. We'll talk about it when he plays. भाई क्या चल रहा है, सरफराज धोखा नहीं देगा और KL राहुल फ्रॉड निकला। Second half of the Is season that has even been terrible true? for Indian cricket. Yeah, it's not been the greatest right now after the T20 World Cup. श्रीलंका अच्छा था बट फिर ODI में भी थोड़ा हक्का बक्का हो गए थे। T20 जीत गए थे। उसके बाद आप बांग्लादेश में कानपुर में थोड़ा बारिश थे, but he played good cricket. It's not been bad, but it's not been like very good. आप जो बोले भाई वो एक बार फाइनल में वर्ल्ड कप, बात सही है आपकी, लाइक उसको लाइक वो इजी स्किप कोट है, मैं भी वही मान रहा हूँ, लाइक उसको इजीली बोलते थे। बेचारा कुछ बोलता नहीं। About Tejas' comment? हाँ About Tejas' comment? या ही वाज सेइंग, व्हाट वाज ही सेइंग? Yeah, he's not a magician के भाई, he's gonna hit a like बैट फिराएंगा 50 मारेगा हर मैच सब। या बट ऐसा तो हर कोई नहीं है मैजिशियन, बट दे आर डूइंग वेल, राइट? Not that's the point. ना इन दिस सीरीज दे डिडंट। हेड ने KL को दो Usually they do. बार फ्रॉड एक्सपोज किया है, एक बार Yeah, it's not फाइनल about में magician वर्ल्ड कप much. एंड सेकंडली IPL के इनिंग्स याद है जहां LG का ओनर ने KL को पेल दिया था। कितने ही मैचेस जितवा दिया, 5 में 1 खेलेगा एंड देन रिजर्व हो जाएगा। ठीक, अब वो मैनेजमेंट का कॉल है। सौरभ भाई विल हैव टू वेट। मगर आपको याद है 2017-18 का IPL उठा लो, विराट कोहली का एवरेज उठा लो, उसमें उन्हें जिस तरीके से लाइक बैटिंग कर रहा था, उन्हें कोविड के बाद जो IPL हुआ उसमें भी आप उसको उठा लो, ही ऑल्सो वाज नॉट विनिंग गेम्स, हिज टीम वाज कमिंग 9th 10th। आई एम नॉट KL Rahul like is not at the level of Virat Kohli, so you can't expect if Kohli can have such a bad patch, then of course Rahul will also have, man, like 100%. There's the reason we have moved on Rahane and Pujara and would have moved on Kohli also along with them if he didn't have this extraordinary records, बोल रहे अबीर भाई। मतलब कोहली अगर was just an ordinary player, then विराट कोहली को भी wipe out कर देते थे। I think Kohli is an extraordinary player. It's just that there are some glaring weaknesses right now, and hopefully he improves on it. He's an extraordinary player, but like, I just Yeah, that's why I'm saying because of his achievements is why he's in the team, or else he would have just been wiped out like any other Indian player. not necessarily. Like it depends on the situation. Like for example, Rahane and Pujara were given a huge stretch. KL Rahul was given a huge stretch. Shreyas Iyer was given a huge stretch. So it depends on the players. I think not everybody is like that. Of course, if he's not going to score runs, then and if he's not Virat Kohli, if he didn't have those achievements, then why would he be in the team? Then others मैं भी बन जाता हूँ. Saying like जैसे हर कोई बंदे को आप रिप्लेस KL को आप उठाए फेंक दिए, विराट को इसलिए नहीं करे, वरना विराट को करते थे, वैसा बोल रहा हूँ. You know what I mean? Had he not, let's just say, had he not have this thing, then it would have been easily replaced. But Kohli is still doing it, right? Like till this day, like you said, उन्हें फाइनल में अभी मारा, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में मारा, उन्हें अभी भी कर रहा है. उन्होंने बस एक सिनेरियो बता रहे कि भाई had it not been this case where all of this had happened in past, let's not just take this T20 World Cup, कि जो विराट कोहली he is just saying कि भाई he would have been replaceable. अभी नहीं है because इतना सब चाहते, despite the failure that we having, this struggle that he had of getting 100 in 3 years and all of this thing. That's what he's So he but that's what I'm saying. He's just stating the 1 + 1 = 2. हाँ, तो वही अब उनका मैच ले रहे अपन. किसी से पर्टिकुलर हेट नहीं है, but every time KL plays bad, it's just the pitch is bad and always the conditions. Travis literally exposed them. इंडिया की बैटिंग लाइनअप इन द सीरीज में एक्सपोज हुआ. सी एवरीबॉडी इज बीन एक्सपोज भाई. रोहित शर्मा का आप मेरे को बोलो स्पिनर्स तो उसको आउट भी नहीं करे मुस्तफा. ऑल द फास्ट बॉलर्स वर गेटिंग हिम आउट. तेजस सरफराज कैसा किया एक मैच में 150, बाकी 2 में 25 रन्स. तो ये टेस्ट है, यहाँ लॉन्ग टर्म में प्लेयर्स को जज करना होता है, तो KL को फ्रॉड कहना गलत है. बिल्कुल सही बात है. सरफराज और KL राहुल, जो सरफराज धोखा नहीं दे सकता, KL राहुल भी धोखा नहीं दे सकता. दिवाली खराब कर दिया इंडिया ओह दिस इज नॉट राइट. ऐसा कुछ नहीं है भाई. आपके दिल में ओह अमर आई डोंट नो व्हाट. और लोग जो कहते हैं कि WC23 हरा दिया KL ने. अरे भाई उसने अगर 66 नहीं किया होता तो स्कोर क्या होता था. 66 निकाल दो तो 192 से हम जीत जाते. क्रिटिसिज्म मिलता है. Yeah, he played a good knock over there as well. KL Rahul was originally meant to be a white ball player who was forced him to change his technique to play the longer format of the game. I think ulta tha. He was a red ball player who turned into a white ball player, and then he forgot his red ball technique. Because if you remember when he first came in 2014, even in the IPL he was in Sunrisers. He had a very solid defense, but he couldn't attack. He didn't have the attacking shots. फिर उन्हें IPL पे focus ज़्यादा करा. He went to Punjab and then he started hitting those shots and everything. In the beginning they used to call him the next Rahul Dravid in terms of solid defense, leaving the ball. Don't get me wrong, not the same caliber, but like just the style of play, right? Same states, good style of play is similar.
But अब उन्हें फिर IPL करा, I think after the IPL his technique became a bit flawed because he was doing really good in the IPL but he changed his technique a bit if you see. या केएल सिचुएशन में भी मैं करूँ तो क्या करूँ। आप देखो भाई, केएल का तो छोड़ दो पीछा, खेल का छोड़ दो, रहाणे का छोड़ दो, दोनों का छोड़ दो, पुजारा का छोड़ दो, जो अभी सामने है उस पे फोकस वो बोल रहे केएल का सिचुएशन में भी क्या करूँ बोल रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं खेला भी तो बुरा, नहीं खेला भी तो बुरा, वैसा बोल रहा हूँ। विराट से केएल का कोई कंपैरिजन नहीं होता है, बट मैं वही तो बोल रहा हूँ, लाइक अगर कोहली के पास इतना पोर परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं तो फिर केएल से भी हो सकते हैं, वही तो बोल रहा हूँ मैं, राइट? लाइक आई मीन कोहली इज मच बेटर देन हिम। सब इंसान गुड एनालिसिस वैसा बोल रहे हैं ऑन केएल राहुल, ऑन पॉइंट। ओह माय गॉड। देखो कंपैरिजन नहीं करे यहाँ पे अगेन, बट मुस्तफा भाई बेसिकली सेइंग अगर कोहली का भी रफ्तार हो सकता है तो केएल या कोई भी प्लेयर रहने दो, लेट इट बी एनी प्लेयर, विराट कोहली कैन स्ट्रगल, एनीवन एल्स कैन स्ट्रगल, एवरीबॉडी हैज अ लाइफ, लाइक जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज अचीवमेंट वी कांट नेग्लेक्ट द फैक्ट दैट विराट आल्सो। But my question is, he's not in the team, he's dropped because of his poor performances. Yeah. So then why are you worried about why it? are you worried about someone who's not in the Because फैज 10-15 बार बोला भाई इसको निकालो टीम से, निकल गया उन्हें, अब खत्म हो गया। बोला था बांग्लादेश के टाइम, अब मगर फिर बोले अरे ने कैसा आ जा रहा, फिर निकाल दी उसको वापस। फिर अच्छा जो बोलो फैज चल रहा हो। उसको निकाल दिया, राइट? अब निकालते तो why are you having a debate? He's not in the अब उन्हें the reason they put him in the BGT is because he has experience and everything, but there's no guarantee that he'll play, right? Like अगर सरफराज ये वो अच्छा खेले तो फिर उसको क्यों लेके आएंगे? इन लोग अच्छा नहीं कर रहे जब उसके एब्सेंस में, तो उसको वापस बुला रहे, उतना ही बात है भाई। आप सिंपल एक बार कार्तिक भाई, यू गाइस आर राइट ऑन केएल, मुस्तफा भाई, फैज भाई, द थर्ड वन आपका नाम क्या है पूछ रहे हैं कार्तिक भाई। और me and Faiz have opposite, by the way, opinions on KL Rahul. I don't like KL He Rahul. doesn't like him. I call it when he doesn't like him. 23 Asia Cup से he's been good. उसके बाद then he fell back बेचारा। Faiz changes with the weather. Me and Mox have the same. Faiz changes with the followers also. KL Rahul. I'll tell you one thing. They ask my name. Why are you diverting? Tell him my name क्या है? मुस्तफा, उनका भी मुस्तफा। जो लोग कहते हैं कि हेड अच्छा खेला इन सेकंड, हेड भी चाह रहा, हेड अपने घर पे बैठा, उसके भी पीछे पड़ गया बन। जो लोग कहते हैं कि हेड अच्छा खेला इन सेकंड इनिंग ऑफ वर्ल्ड कप 23, व्हाई नॉट केएल राहुल? बिकॉज फर्स्ट इनिंग में पिच लो था, ड्राई था, थी, बाद में ड्यू आया और बॉल अच्छा आया, बॉल बैट पे, या हमें करेक्ट है। एंड हम टॉस भी, हम लोग यही जगह में मैच वही देख रहे थे, 1 साल हो गया भाई, सही टाइम पास, एंड उसके ही बारे में बात कर रहे हैं। Cricket is next level, man. Everything comes life, yeah. Life will circle like a Why should KL be given equal chances as Virat? But he's not given equal chances. Why Virat has done, KL haven't. I'm not worried about KL, but you said shit that he should be given equal. No, He should be given an opportunity to fail as well, बोल रहे। No. मैं बोला कि if Virat Kohli is failing, then how can you not expect KL Rahul also to fail? उतना ही बोल रहा हूँ। आप जो बोले अभी, आप जो बोल रहे give equal chance, मैं equal chance की बात ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ equal chance है ही नहीं। KL Rahul has been dropped, he's not in the team. विराट कोहली है, केएल राहुल है भाई, हम भी मानते हैं ये चीज, ठीक है। पॉइंट जो मुस्तफा भाई का है, ही इज जस्ट सेइंग कि भाई अगर वैसा प्लेयर भी फेल हो सकता तो ये भी बंदा फेल हो सकता। हाँ, वो बोल रहा हूँ मैं। होता ही, हम ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स कंपैरिजन कोई भी नहीं करेंगे, हम भी क्रिकेट देखते हैं, आप भी क्रिकेट देखते हो ऑब्वियसली। आई एम सेइंग विराट कोहली हैड अ रट, राइट? लाइक एक्सट्रीम, ही कुडंट स्कोर 100 ब्रो। हां, और रोहित उसको बहुत बैक करा, एवरीबॉडी बैक्ड हिम, रवि शास्त्री बैक, मैं तो वो टाइम पे बैक कर रहा, सब चल रहा। ब्रो मैं वो टाइम पे डिप्रेशन में आ गया था। इट वाज विराट कोहली का बल्ले से कोई रन नहीं आ रहे थे, कुछ भी नहीं आ रहा था। 2-3 साल हो गए, एवरीबॉडी सेइंग इसको क्या हो गया, छोड़ो क्रिकेट। Faiz was lucky, he was with partying in Uber and stuff. That time he didn't have to focus, but I was depressed, bro. Yeah. I know the trauma you that was hard, man. एक बंदा डिप्रेस होता है, एक बंदा लाइक पार्टी करता है। Yeah. It was Everyone has their football own way of season has coping ended in mechanism. Australia and they have started to install the drop-in pitches at the Optus Stadium, Perth. Also, you'll see some backyard cricket now. You'll see Instagram videos in Australia. हम जो इंग्लैंड में हो रहे डालेंगे बैकयार्ड। इंग्लैंड में I think yeah, I wish man we could have gone to If Australia. India want to win BGT, then send this team to Australia for that A tour to get preparation. I mean, they're going to be. ये कल भी बात हुई थी। Yeah, बिल्कुल सही है। They're going to also
यू नो कौन सा पर्थ में वाका राइट, वाका को भी मतलब किराए पे लेने वाले करने वाले दो है, वाका पुराना है, ऑप्टस है। पुराना में आई थिंक दे आर गोइंग टू डू द ट्रेनिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इज द न्यू वन। ये सब फालतू बात है, हम हारे वर्ल्ड कप में क्योंकि वाज नर्वस, टीम वाज नर्वस, कौन स्टैंड अप टू एग्जैक्टली टीम, आई लाइक दैट, टीम वाज नर्वस, कौन स्टैंड अप टू द सिचुएशन। अगर ऑस्ट्रेलिया फुल बैटिंग करती तभी वो मैच जीतते थे, कैन टेक अप द फाइनल प्रेशर, करेक्ट, सही बात है, सबको प्रेशर था, उधर भी प्रेशर था, या उधर ही किधर टीम में। अच्छा टीम में, हाँ बिल्कुल बराबर बात है भाई। टीम के ऊपर अपन बोल सकते हैं, एक आध बंदे के ऊपर कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, एंड जैसा बोले भाई थोड़ा अब बोले तो बद याद दिला, फिर केएल राहुल के बारे में फिर निकलता टॉपिक। केएल राहुल से हटते हुए मुस्तफा मुंबई स्लो हो गया था मैच, Mumbai is still left. Thoughts going into Mumbai? Any changes that you would make? I mean, I think they made good changes in this match, but it didn't work out. So it depends again on the wicket. You know, उसके हिसाब से combination बनाएंगे. Will they go with the trend? They've lost on a fast pitch and a turning pitch. Will they make it a flat pitch now? I don't know. Red soil है, so in Mumbai, generally what happens is the first 1 hour each day there's a bit of swing and everything. Even Ravi Shastri was saying it on commentary today. And then it breaks a bit the pitch. You can also have a rank turner there too. So let's see what kind of pitch. According to that, you'll have to go. Would you rest Bumrah in this test? भाई कार्तिक ही सही। No, because you. I mean, like if there is something movement for the bowlers, then you need him, right? Because it's not anymore. वो ज़माना चलेगा कि series हार के खत्म हो गया. Now you have to still win this test match. If you don't win this test match, your whole thing वहाँ पे आपको 5-0 जीतना पड़ेगा. Your points will go down. You see now the points table of what was it before the New Zealand series, and now India is still first, but what the margin has dropped like a lot. So like I don't think you can afford to lose the Mumbai game. If they cannot send all the players, then send some of them, especially Sarfaraz Gill, Yashasvi, Rahul, and Jurel. Why Rahul again? Yeah, I mean that's a good shout. Let's see what India does, and they're still playing this series. अभी एक और test match है, first to fourth member, so they can't send anyone before that, I guess. बट विल सी हाउ इट प्रोग्रेस। शुभमन गिल के ऊपर भी थोड़े लोग आ जाएंगे अगर उन्होंने मुंबई में नहीं परफॉर्म करा। अगेन दे कम बैक। वाइजैक के पहले भी बहुत लोग आ रहे थे कि भाई बेकार हो गया प्लेयर, फिर वाइजैक में सेंचुरी मारा था इंग्लैंड के खिलाफ, फिर थोड़ा खामोश हो गए थे, फिर उसको निकाले। सो इवन अब बहुत करीब है कि भाई यू नो शुभमन गिल एंड अमर सिंह। आई फील जसप्रीत इज ओवरवर्क्ड एज अ बॉलर राइट नाउ। या अमर, आई मीन मेरे को भी वही है कि आई थिंक जसप्रीत बुमराह, आई वुड रादर रेस्ट हिम राइट नाउ। आई डोंट वांट टू लूज हिम फॉर द बिगर टूर्नामेंट। दैट्स माय ओपिनियन कि भाई इफ ही इज ओवरकुक्ड और थोड़ा बहुत ज़्यादा खिला दी उसको रिसेंटली, मे बी जस्ट सिराज को ले लेके, और इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सिराज को खिला के ओवरकुक कर दो। हाँ, सिराज तो बेचारा ऑलरेडी कुक्ड है। If you want to be precautious for injuries, then that's a good point. But you have enough time to rest after the Mumbai Test match. Like so, yes. But if you want to be precaution लेना है तो ठीक है. Like it's not a bad shot. But I'm just saying I don't know if they'll rest him because they really want to win the Test match. And also, bro, Indian उन्हें कितना bowling करा अभी ये Test match? उसमें तो ज़्यादा नहीं करा। Overworked बोल रहे हैं अम्मार, मगर मेरे को तो दिख रहा है। भाग के। मैं agree with Faiz. भाई क्या बात है, बड़ा सीरीज। But we don't agree for the tea. Ibrahim bhai, in the comment, Ibrahim bhai, you can let us know what the situation of the table is. I think Mumbai will be a flat pitch and a high scoring draw बोल रहे Ibrahim bhai, अपने normal जो South African वाले Ibrahim bhai. Interesting. I think we still need to go with this similar kind of wicket and go for the win. I don't think the draw is good enough. You need to win this Test match. It's very important, man. I know the series is gone and everything, but like it doesn't matter now. You still have to get those points, and you need some confidence going to Australia. But yeah, you're like it could be a flat scoring draw. I'm not denying that, but I would rather see it turn again. You think one of the reasons of making it flat would also be by giving these guys a little bit runs under their bat, तो थोड़ा confidence boost होगा going into Australia? It could be, yeah. Also man, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये अश्विन का भी कॉन्फिडेंस और वो हो जाएगा, राइट? लाइक वो भी देखना पड़ेगा इन लोग का क्या। इट कैन गो ईदर वे। सो अश्विन रैंक टर्नर पे भी नहीं चल रहा था। अमर गेव अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन यस्टरडे व्हिच आई मेंशन्ड एट द स्टार्ट ऑफ द शो। सो बट उसका भी चल रहा है। सो फ्लैट विकेट दे दिए फिर बॉलर्स के जाते कॉन्फिडेंस। सो दैट वर्क्स ईदर वे। Yeah, I guess so, but मगर आप मेरे को ये बात बोलो, आप बोलते कि भाई अपने बैट्समैन को कॉन्फिडेंस रन्स नहीं आ रहे, थोड़ा आसान कर दो पिच। उनके तो बैट्समैन अच्छा खेल ले रहे। रचिन रविंद्र सेंचुरी मार दिया, उन्हें मार दे रहा, वो मार दे रहा। नेचुरल कंडीशंस है हाँ, पहला मैच भी देख लो, इसलिए हम वही बोल रहे हैं। तो आप कौन सा पिच होना आपको? लाइक उनके तो बैट्समैन तो मार रहे हैं पिच पे। अपने बैट्समैन की बात कर रहा हूं मैं, स्पेशल बनाना पड़ेगा। स्पेशल बना ऐसा बना रहा है कि भाई रन, मगर मैं वही बोल रहा हूं, अगर पे नहीं मारे तो फिर तो मगर अगर ये पिचेस पे आपके अल्लाह चला दे होटल वाली सिचुएशन हो जाएगी। ये पिचेस पे अगर आपके बैट्समैन नहीं मार रहे, उनके बैट्समैन मार रहे, तो वो पिचेस पे उन लोग और डबल मारेंगे, फिर डबल सेंचुरीज आएंगे रचिन रविंद्र उन लोग के। या मे बी अपने बॉलर्स कुछ निकालेंगे फ्लैट ट्रैक पे शायद, क्या मालूम।
Because they are making him play since Bangladesh and he's playing all the matches बोल रहे अमर बुमराह is resting के लिए. Fair enough. Like ठीक बुमराह है. has bowled 90 overs across all the 4 tests he's played. नहीं फिर भी कम है. So एक ही दिन का हाँ. पूरा एक दिन टेस्ट मैच का डाले उन्होंने. कम है नहीं मुक्स? हाँ, कम है. No, he'll have to bowl much more in Australia. Yeah. हाँ. So we'll need to probably then rest. But the thing is, in Australia, I'll tell you something. What I noticed, right? No matter how much you rest, when you're in that series, right? वहाँ पे rotation rest important रहता है because अगर आप उन्हें उसको ये टेस्ट मैच ऑफ दे दिए, वहाँ पे उन्हें एक दो टेस्ट मैच खेलेंगे. You think he'll be able to play 5 लगातार with the traveling? It's going to be difficult. 100%. How will this? That's why we have like 5 or 6 fast. No, even if you rest him now, like what is the guarantee that वहाँ पे उसका उन्हें पूरा fresh you're रहेगा? considering him as your stock like main bowler, right? Yeah, but मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि अगर उसको रेस्ट कर दिया ये ऑस्ट्रेलिया में, डोंट यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू रेस्ट हिम इन अ मैच देयर? Because how will he last all 5 matches? But you rest him now so he can play at least. But it won't work like that. Play for 1, 2, 3. But what I'm saying, it won't work like that because you're in the action at that time. Right now, if you rest him, ठीक है, it's fine. But there is no guarantee that even with the rest that वहाँ जाके injured नहीं होगा या वहाँ जाके थकने जाएगा. तो नहीं रहेगा, but at least ये होगा कि psychologically he'll be a little The bit. only thing is that he won't get injured in this now. अब खेल लिया injure हो गया. हाँ, वही है, उतना ही है बात. अब वो risk है. That's the only risk. Otherwise, एक चीज है. Also, I think देखो भाई, जैसा 4 मैच में back to We'll back ask खेल him रहा है, though, he doesn't need match fitness or game time to get himself in the zone. I am saying अगर इन्हें अब रेस्ट करा at least 1 to 2 seconds तक end में at least he had rest psychologically कि हाँ भाई मैं एक टेस्ट मैच बैठा, my body is ready to go for this. Like, मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ पे 3rd या 4th टेस्ट मैच उसको रेस्ट करना पड़ेगा. That is more important. Yeah, and because if लगा you win the first and the second or at least yeah, one वहाँ of पे those, then maybe you will need to. because आप बोल रहे हो because you're not gonna get special energy power by just resting like when you're in the thick of the series that time. Like so, for example, how are they rotating him in the England series? You might have to do that because it's a 5 test match series in Yeah, so Australia. if you win one of the first 2, then you can afford Because his workload will be more in Australia than in India. India में उतना उसका workload है नहीं, like it's not that much. Yeah. वही ना पिच टॉस कंडीशन ये सब थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट अगेन इफ यू फेल यू कैंट ब्लेम द कंडीशंस, नॉट यू लिटरली बोल रहे हो. बट शमी विल बी बैक, मार्क माय वर्ड. शमी अगेन आफ्टर द 3rd टेस्ट इज व्हाट्स मैन एक्सपेक्टेड ऑफ हिम. रोहित शर्मा आल्सो मेंशनड दैट, बट दे वांटेड शमी, दे ऑलरेडी अनाउंस्ड हिम. अभी तो वी हैव टू सी की स्क्वाड अनाउंस हो गई, उसमें इतने ज्यादा प्लेयर्स थे, फिर आपके ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी अनाउंस्ड है. So I don't know how much of a guarantee Shami is, but if he does come, we know what he's capable of doing with the new world. I think they're going to make flat pitches in the 3rd test, just like the pitch in the last match of the PGT 2023 in Ahmedabad. What are your thoughts on Maxwell? Extract on Sehwag and his fallout at Punjab Kings. I didn't read the book yet. Do you have any idea of Glenn Maxwell having to say something about Virendra Sehwag? I didn't hear. No, I think he wrote a book, maybe Extract बोल रहा हूँ on Sehwag, or maybe it was like an article. I'm not sure. They were together in Punjab. Yeah, they were in Punjab and there was a fallout between them apparently. अच्छा. There was you guys knew Andrew Simons ने उसको लटका दिया था IPL के टाइम पे. वो इंडियन प्लेयर को कौन था यार वो? हरभजन. नहीं लटका दिया. हाँ, चाहल को कुछ याद आ. हाँ, चाहल या किसी को लटका दिया था बल्कि he was drunk or something and लटका दिया था उसको. चाहल कुछ था I think. Yeah, Right? yeah, Something like that. That I remember. This I one. don't think Bumrah is playing on the 3rd test. We'll have to wait and see what. Yeah, you guys are right, man. If you want to take the precaution, I think it's fine. I think Siraj also should be rested. Maybe I don't know who will get in that place, but right now it's all going to be again depend on the pitch. If it's a flat wicket, then you get your fast bowlers out and stuff like that. So I mean, there's a lot more to come. But yes, you've got to credit New Zealand, incredible. And again, Devin Conway, his comeback to cricket, like the way he was not doing the best in the last season of the IPL as well. He had his injury in the index finger, वगैरह. But जिस तरीके से उन्हें comeback करा, he gave New Zealand good starts on a lot of occasions in this series. And that's obviously from coming from the top. अगर runs आ रहे आपको, it makes life more easier for the middle order batsmen. Blundell as well, I think incredible 41 there. Good partnership with Phillips to get you to 300. उसके बाद आपका captaincy ज़बरदस्ती. Rachin Ravindra, the future star of like New Zealand as well. So yeah, I mean overall New Zealand completely outclassing India at home. And also because everyone's I need to say this, Ben Stokes got wiped in Pakistan. Baz ball को फोड़ दिए. Sajid, Noman, man, incredible. I think they were outstanding. Shan Masood is did a really good job. Fantastic. We have to praise them as well. England struggling in away conditions, turning conditions, and we knew that this would happen. But it's good to see, Pakistan cricket looked like they were in the dumps. मतलब USA से हारे, Bangladesh से हारे,
Afghanistan se you're losing every single game possible. To come back like that, I think incredible job. Yeah, I think it's been outstanding. Right now, they are the best spinners in the business. Yeah, I mean, and with the bat as well. And the bat भाई छोड़े नहीं बल्ले के साथ दोनों 30-30 बल्ले के आगे हम दोनों संभालेंगे पूरा वो जो फोटो है साजिद का पूरा ब्लड उसके शर्ट Yeah. वो भाई अलग लेवल फीस है वो शर्ट वो फोटो एंड आई थिंक क्रेडिट टू हिम मैन ही फॉट long and hard and today it's reaping benefits and Noman as well I think दोनों मिला के Noman's got 20 wickets Mustafa and Sajid got 19 टक्कर की चक्कर में insane man I think they killed it you know England again England were very disappointed especially with the way they bowled in that second innings when you know they batted first they got to 260 ठीक है वहाँ पे आप पाकिस्तान को 180 for 7 कर देते you should have got in the lead I think some way or the other Saud Shakil batted brilliantly with the tail you know Sajid Noman batted beautifully but फिर भी England should have gotten some sort of lead over there they bowled terribly Ben Stokes was under pressure throughout Joe Root as well all of them they performed poorly but credit to Pakistan they were outstanding yeah after like so much criticism after losing the Bangladesh or losing the first test on a flat bench and Babar देखो वो सही हो गया बात I was completely wrong like Babar was the problem right now like that's why yeah like उन्हें भाई flat पिचों पे like खिला दे रहा था ये वो हम लोग defend कर रहे थे but yeah but hopefully he comes back makes a comeback and does well for the team लेकिन they've shown that there is no player bigger than the team right yeah another reason I said that you like I think pace he bowled around 135 almost 10 kilometers lesser Bumrah की बात कर रहा मत then also it's not but rest is about the injury I feel yeah it's fine you're right you're right I absolutely Maxwell agree in with his that. book said when he made us captain of Punjab in 2017, he made a WhatsApp group so him and the coaching staff could discuss starting 11 and plan. Sehwag replied he would select the playing 11. Sehwag replied he would select the playing himself and he did not the whole season and caused confusion. I mean, by the way, you know, Sehwag has had a lot of problems. Even with Dhoni, he had a huge problem. You remember the 2011-12 tour after the World Cup, जब ऑस्ट्रेलिया को गए उन लोग, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहवाग को बिठा देते एक बार उन्हें like you know he said because धोनी बोला था कि like you know we need to rest players एक सहवाग गंभीर और तेंदुलकर में से एक खेलेंगा because they're older and stuff तो उन्हें मुंह पे बोल दिया था वो टाइम पे थे कि this is rubbish ये वो मेरे को तो नहीं मालूम तो उन्हें धोनी के खिलाफ भी बोला like he has a history of being blunt not anger issues he सीधा बोल देता वैसा what type of pitch do you think we are going to see in the third test failure of our batsman I mean hopefully we would say it's the same Turner and our wicket and our batsman can perform that but mostly public तो वही बोले कि भाई flat होगा it won't have anything in it Basball saved test cricket in March Jupiter Saturn Neptune England claims to have saved test cricket by not even qualifying once for the WTC yeah I mean in terms of entertainment if you look at that in terms of entertainment yeah I mean England's done well but it's not been given them a lot of benefits in the test cricket domain they're not winning as much as you would want to but they're playing entertaining cricket according to them and we agree I mean me and Musa are huge fans of England the way they play test cricket but yes right now it's not looking benefiting for them in terms of results and WTC finals so they really need to work out a system where there's a balance I think something that you could say the way they played in Hyderabad that is something that they played well or the way India played in Kanpur as well like you could say okay, bhai, there was a balance there as well so I think you got to pick your moments hit runs no one's saying don't hit runs but you can't always be in an attacking mode but that's the element of their game that's why it's called baseball that they want to play high risk high reward so there's no reward yet but the risk is non-stop what I Pakistan played really well yeah they played fantastic and again like after all the pressure media pressure after captain a long time नहीं risk of job job नहीं है कि UAE yeah जीवे बोल रहे आप तो I'm saying जॉब का खतरा था शान मसूद को उसके बावजूद ऐसा कप्तानसी करना भाई बहुत जमाने के बाद ऐसा बैटिंग करे लोग पाकिस्तान आई थिंक दे आर हैप्पी राइट और इस टाइम दिवाली भी है क्रैकर्स भी रखना मुश्किल है लोग कैप्टन करेंगे yeah choose your favorite for WTC final now after the latest result I still go with India and Australia
I think they're still my favorites to go into thing. I mean, maybe India is biased and Australia have a better chance right now than India if you realistically look at it. But I know, Ibrahim, you're coming from We a have South lot of African talent, bro. perspective. Don't worry, and we'll that's such a- win. We will. South African perspective is creeping. We'll in, I win think. this test series, man. Yeah. with Australia. England lost this series because of batting form of their captain and unexperienced bowling attack apart from Leach. I mean, the conditions did dictate the spinners to come into play, but yeah, there was inexperience in them, so you can't completely blame them. I think they did a good job. Their bowlers also did a good job. It's not like Pakistan batted out of the skin, except maybe but I think batting let them down heavily. There's a lot of dependency on Joe Root in these kind of situations and in these kind of conditions. Ben Duckett, Zach Crawley, all of them, they're not very good players of spin. So I think more than the inexperience, it is the batting that let them down of the whole squad. England? Yeah. Even the bowling, man, they should have wrapped it up earlier. Yeah, wrapped it up, but again, like when experienced bowler, but I think more effective, more impactful in the whole series was their batting. I think they couldn't get a lot of runs. But first के बाद तो कोई batting करी नहीं बैटिंग 100% बॉलिंग भी बिकॉज आप बॉलिंग में अगर ऑल आउट कर दिए 60-70 का लीड अगर ले लिए तो जीत जाते थे मैच इवन इफ यू फेल 100 ऑल आउट तो पाकिस्तान पे चेस 200 ऑन द पिच इज हार्ड 100%. I mean, फिर भी जो रूट के ऊपर तो बहुत डिपेंडेंसी है. And then I think Jamie Smith is going to be one to watch out in the future. I think he's been fantastic batting अच्छी उसकी and stuff like that. So yeah, if I think Australia versus Sri Lanka or South Africa, I think Australia versus Sri Lanka or South Africa. Oh, that's a good call. I mean, Australia versus South Africa or Sri Lanka for the WTC final. Your latest picks after the results today. Who do you think? No, man. I think it's very tough because you said the keeps changing. Yeah. But I think just today के basis पे अगर अपन I think Australia will go. The second team, I don't know. Like it could be South Africa, it could be India, it could be Sri Lanka. Yeah, Sri Lanka as well. New Zealand also in the fourth spot right now, if I'm not mistaken. New Zealand के लिए मुश्किल है. But yeah, they're 50% PCT. The others are like 60 and like 55 like that. If South Africa win the second test against Bangladesh, then they are playing the WTC final against South Africa. Is that right? I have to do the maths on that. But again, India has to also play Australia, so we have to still wait for that cycle to finish for it to be a confirmation. See, I'm being a little bit over, positive here, but I still feel let's just wait till the BGT. Let's wait what happens there. The next tour after this is India, South Africa, Mustafa T20 led by Surya Kumar Yadav, Hardik Pandya is there, Tilak Verma, and all of these guys are there. So a lot of cricket to come from India. And we'll wait and see what happens with both these series. But yes, after this New Zealand series, a lot of criticism coming down on India. How do you think Gautam Gambhir is going to bounce back out of Yeah, I mean, there will be criticism 100%. उन्हें coach अभी बना and then to lose a home series like that, there will be a lot of pressure on him. And especially if you lose the Australia series, वो pressure बढ़ते जाएगा. So now it's about reflecting on this, कैसा improve करना है and on to the next match now. They have to take this into consideration why they lost and you have to criticize heavily क्या problems हुए. But now अब आगे बढ़ना है and he has to try to get that right combination because otherwise coach captain को तो they will be put under the scanner, they will be criticized 100%. Yeah. Loser of the BGT won't make the final, especially if South Africa win all the remaining things. They will end on 69%. There you go. Oh my God, South Africa का देखना पड़ेगा because Ollie Pope should be dropped and Zach Crawley should be given a series. Zach Crawley one of the most consistent. Zach Crawley has been playing for like 2 years. Yeah, he's been playing for quite some time. Ollie Pope, yeah, थोड़ा बहुत hit and miss है. But yeah, I think that pretty much wraps up everything today that we had to cover. India versus New Zealand. India losing a series after 12 years on home, actually precisely 4,331 days. Congratulations to New Zealand. I think a fantastically fought, tour. They came with a plan. They executed the plan. They got the relevant players. Their batsmen grinded it out better than India. So you've got to credit them on that. Pakistan beating England and winning a home series after a long time. Good to see that as well for them. I think West Indies Sri Lanka is going on right now. I'm not sure what the score is there. And tomorrow I think it's Afghanistan versus 81 for Sri one Lanka. match, 81 delayed for by a delayed by rain. Sri Lanka कभी नहीं बदलेगा. Afghanistan versus Sri Lanka emerging cup tomorrow. That's the final going to be there. That's going to be a very good match to watch. India का कोई chance नहीं है. अगर pink ball test नहीं होता तो there would be chance to win 3-2. But this time Perth and pink ball test दोनों. Back to back रख रहे हैं लोग. भाईजान कार्तिक भाई तो already like. Let's see. Let's hope for the best. Let's hope for the best. I agree with you, but let's hope with the best. We'll never say never with India. And till then, take care of yourselves. We'll come back tomorrow with a live. And Zach Crawley plays too good. Yeah, I mean, he's not very consistent. But that's about it. Thank you so much. Like and subscribe to the channel. And hopefully to